है। अगर आप उसके चिंता में रहेंगे तब वो फिर हो गया, आपकी बैंड बन जाएगी और आप कभी सीख नहीं पाएंगे। राइट, मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे बहुत ज़्यादा कि भाई मिस्टेक ना हो जाए। Hi everyone, welcome back to a new video and I'm Santosh Shah. Welcome you all to this beautiful channel Learn English with Fun, where you learn every concept by enjoying a lot. Well, in this today's video, I'm going to share one of the beautiful secrets that I had when I was learning and improving my journey of spoken English. Then I used this trick and improved my English like this. So today in this video, if you watch this video till then, you will also understand that how to talk about any simple random topic. किसी भी random topic की वजह से आप जो रुक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं. This is my guarantee. Watching this video till the end will give you a wonderful idea to practice from today itself. आज से आप practice करना शुरू कर दोगे. Please watch this video till the end, and if you are new over here, I would recommend you to subscribe this channel क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो हम अपलोड करते हैं जो काफ़ी फ़ायदे होते हैं. आप चाहें तो विजिट कर लीजिए चैनल को, काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड हैं जो हम आपके लिए हमेशा पोस्ट करते रहते हैं. सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम रिलीज़ करें यू मस्ट गेट दोज ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन योर यूट्यूब. Alright, let's move further in this video. Well, today in this video, I will explain you that how can you speak or how can you talk about any random topic in English. So friends, this activity is called See and Speak. अर्थात देखिए और बोलिए. कैपिटल C वाला C नहीं, SEEC and Speak. तो देखिए और बोलिए वाली एक्टिविटी में आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली किसी ऐसे चीज़ को उठाना है जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपकी आंखों के सामने है, आप उसमें से किसी एक चीज़ को उठाइए और उस पर बोलना आप शुरू कर दीजिए. इन द स्टार्टिंग यू मस्ट फेस सम डिफ़िकल्टीज बट यू हैव टू हैव स्पेस, यू मस्ट हैव सम पेशेंस कि आप उस डिफ़िकल्टीज से फाइट करें कुछ दिनों तक. आई एम गिविंग यू दिस गारंटी कि आप विद इन 3-4 months यू विल सी अ ग्रेट चेंजेस इन योर सेल्फ. आप बहुत अच्छी चेंजेस देखेंगे आप अपने अंदर कि आप भी कुछ बोल पा रहे हैं. दैट्स एब्सोल्युटली इन इंग्लिश एंड दिस activity will certainly help you a lot in order to improve your spoken English and in order to improve your recollection of some activities. कि activities के दौरान हम कैसे किसी चीज़ के बारे में बताएं, किसी भी चीज़ को हम कैसे explain करें, ये सारी चीज़ें आपकी improvement हो जाएगी. In this video, I will explain by picking an example right now in front of me. Whatever the thing that is lying in front of me, I'll simply pick a topic. I'll simply pick up any object and I'll make that a topic. मैं उसे एक टॉपिक बनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. So friends, I'm going to choose, like there are so many things on my table right now. As if I tell you what are those things, the camera, the camera bag, the laptop, the pen tab, the mobile phone. I have a watch. That watch is lying on the table. And some chargers are there, some battery chargers, my markers, my pens, my AirPods. So there are so many things on my table. I'll simply choose a very easy thing to make you understand, and that is my watch. It is a watch which is of course very nice and I'll try to speak right now about this topic. और मैं इस वॉच के बारे में अभी मान के चलिए अब मेरी टॉपिक जो है वो वॉच बन गई, यानी कि अब मुझे इस वॉच के बारे में कुछ आपको शेयर करना है. अब कुछ भी अब एटलीस्ट आप 5 से 10 लाइन में अगर आपने शुरुआत में बोला तो आपने बहुत अच्छा किया परफॉर्मेंस. सो आई विल ट्राई टू बेस्ट राइट नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या आप बोल सकते हैं. पहली बात तो आप इसके अपीयरेंस के बारे में बता दिए, उसके लुक के बारे में आप बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉच इज़ फ्रॉम टाइटन कंपनी एज यू कैन सी हियर. I hope it is focused right now. Okay, it is from Titan company. I bought this watch before 6 months and it is perfectly going on. It's perfectly right now and it is in use. Actually, I use this watch regularly and I haven't faced any difficulties in this. Yes, this belt was broken but I went to the store and got it replaced by that brother and he did it really without any charges. He did it. Okay, I bought this from Madhubani. I bought it from Madhubani. I'll not take the store's name. I'll simply what can I add more things about this watch, and that is it is pure leather brown belt in this watch and which adds a very good golden glitters to my outfit and it looks perfectly and I love this watch. I bought this for approx 2000 and 2200 I guess, 21 and 2200 I guess, and which is of course worth it. It has a
ब्रांडिंग देयर बैक साइड एज वेल ऑफ द डायल, इसे हम डायल बोलते हैं। ये जो चीज़ आप एरिया देख रहे हैं इसे हम डायल बोलेंगे। सो लाइक दिस, वट एवर यू फील कंफर्टेबल अबाउट चूजिंग एनी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने चूज़ किया है और उसके बारे में जो भी आपको कंफर्टेबली कुछ मालूम है, कुछ भी आप कंफर्टेबल तरीके से आप बता सकते हैं, वो बताइए। Doesn't matter that you commit mistakes in the starting. Of course you must be committing some mistakes. Nobody can be very perfect without committing mistakes. कोई एक बार में कोई perfect नहीं बन पाया और ना बन पाएगा कभी. So it is obviously very clear that you must commit some mistakes. वो mistakes तो होनी है, right? I say this always in my video. Mistakes तो होनी है. अगर आप उसके चिंता में रहेंगे तब तो फिर हो गया, आपकी बैंड बच जाएगी और आप कभी सीख नहीं पाएंगे, right? Mentally आप डिस्टर्ब होंगे बहुत ज़्यादा कि भाई मिस्टेक ना हो जाए. So you must फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। That's it. So friends, right now I have talked about this watch and it was quite fine that I talked about this watch, and simply you can choose another topic as well. Some like suppose that I have chosen this watch right now, you can choose anything. You can choose about the camera, you can speak about the laptop, you can use you can speak about the pen, you can speak about the pen, you can speak about mobile phone, and of course these are the wonderful topics. You can speak so many things about this. For example, if I talk about this mobile phone right now, so I have a mobile phone which is from Vivo company and I bought it before 2 years and it's completely in use and it is going on perfectly. But the very bad experience that I had about this mobile phone is the SD card slot is not working in this, and this was really very bad experience while buying this. I could not check at that store and I purchased it. So this is what the bad thing that I feel. Its camera is really fantastic. Earlier, before purchasing the DSLR, I was shooting all the videos, I was recording all the lectures with the help of this mobile phone only, and it gives a very genuine quality videos. But somehow I had to switch it on camera, so I did. So you can simply add so many topics in your daily life activities जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हैं. Now आफ्टर मेकिंग यू ऑल दिस अंडरस्टैंड, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी और आप भी अब से कम लाइक 10 to 15 मिनट्स यू कैन चूज़ अबाउट एनी टॉपिक. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू अडॉप्ट दिस हैबिट, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई सीन आप देखते हैं, कोई दो इंसान को देखते हैं, आप लड़ाई करते हो, तो आपको वहाँ भी आपको कमेंट्री कर लेनी. भाई कमेंट्री करके तो ये चीज़ बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकती है. This can be improved by doing commentaries as well. Listen to more and more conversational videos. Listen to more and more English स्पीकिंग वीडियोज़, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. जब आप सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें, जब कंटेंट्स आपके माइंड में भरेंगी तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत अच्छे से स्ट्राइक करेंगी कि हमें भी भाई अब इंग्लिश में ये चीज़ें हमें बोलनी है, राइट. जैसे कि आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं तो ऑफकोर्स यू मस्ट बी थिंकिंग कि मुझे भी ऐसा बोलना चाहिए. एंड ऑफकोर्स यू मस्ट स्पीक ऑल दोज थिंग्स व्हाट लाइक नॉट लाइक मी, फार बेटर दैन मी, मुझसे भी कई गुना बेटर. और ऑफकोर्स यू मस्ट ऑल डू दिस. ऑलराइट गाइज, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि आप प्रैक्टिस कैसे करनी है. कंटिन्यू करिए अपनी प्रैक्टिस. जो भी आपको इश्यूज़ आती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम उस वीडियो को आपके सामने लेके आएँ, आपके सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएँ. चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.